In the name of Allah, the Rahman and the Rahim, dear students and viewers, Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. Topic for today's lecture discussion is the role of memory in language learning and communication. Dear students, it's one of the important topics in your course contents, that is in psycholinguistics. So, in today's class, we will study that what is memory, what are the different types of memory, and what is the importance of memory in language learning. So firstly, we will define, okay, what is memory. Dear students, over the years, many ways of understanding a complex process that is called memory have been proposed. Like many ways of understanding are proposed, okay, for the study of this complex process, memory. This is a complex issue for neuroscience because the models proposed usually have difficulties in connecting the complex processes involved in them. Memory is a sensitive process that depends on the type of task to which it is subjected. Memory is the cognitive process that makes it possible to record, consolidate, encode, store, retrieve, and access information. So it means that memory is the ability to take information, to encode information, or to store and retrieve information at the later time. Okay, so it's a cognitive process. It makes us able to record information, to consolidate information, to encode. Encode means to express, like we have the process of encoding and decoding. Restore information or store information and retrieve information. Okay, retrieve, like when we are trying to recall something, and access information, if we have information and we are going to like discuss or to retrieve or to bring information into the surface of our memory. Memory is the ability to remember something. It's by Oxford Advanced Learner Dictionary. In psychology, memory is broken into three stages. Dear students, memory is also discussed under the umbrella of psychology, and we are studying psycholinguistics, so that's why we have concern with memory. Memory also plays an important role in language learning and language processing, in language storing or memorization. So, in psychology, memory is broken into three stages. The first one is encoding, okay? The second stage is storage. Like, first we are expressing, and then we are storing information, and then at the later time, when we are like required to retrieve information, to recall information, so we take help from the memory. Now we are having different types of memory, dear students. So Prano and Narbona, they describe different types of information, firstly, and secondly, Gasha describe different types of memory while discussing different types of meanings. Like, dear students, we have different types of meanings. Like we are studying these types of meanings in semantics, okay, the scientific study of meanings. Like we have literal meaning of words, we have denotative meaning, we have connotative meaning, we have like basic meanings of words, primary meaning of words. We have like sometimes we are having like poetical meaning of words, okay. Poets are using words in other senses, poets, writers, novelists.
So we have like at least we have 7 types of meanings. Okay, so when they were discussing different types of meanings, they described different types of memory. The first one is sensory memory. The second type of memory is short-term memory, and the third one is long-term memory. Dear students, now sensory memory. Sensory memory allows an individual to retain sensory information. Sensory here means that the information which occurs through our physical senses, like the sense of touch we are having, the sense of like taste. Okay, we are seeing things, touching things, we are tasting things, we are hearing things. So these are different senses. So it allows an individual to retain information through senses. It is not involved in higher cognitive functions. Like short-term memory is involved in higher cognitive functions. Like higher cognitive function means critical thinking, when we are making decision, when we are like taking decisions in a greater sense. So sensory memory is not involved in cognitive abilities. Like sometimes we are having very intellectual discussions, sometimes we are solving analytical questions. So these things required great cognitive skills, and sensory memory is not involved in these cognitive skills. It is not consciously controlled. Okay, consciously controlled. Like we are seeing things from surface. Okay, we are not trying, we are not like actively involved in things. It provides us a detailed representation of sensory experience. Sensory experience comes through senses. There are different types of subtypes of sensory memory. Visual memory. Okay, visual memory, like it is related to the sense of seeing. Iconic, echoic is related to sounds, like things comes through sounds. Auditory, through auditory sense, like through the sense of hearing. So these are the different types of subtypes of sensory memory. Now, dear students, short-term memory is very important with regard to language learning. Short-term memory is also known as working memory. It holds only a few items that from 7 plus, like 7 plus items are 7 minus 2 items. Like sometimes it takes like 9 items, or sometimes it takes 5 items only for 20 seconds, or for 1 minute. Okay, like sometimes 20 seconds, till 20 seconds it retains or sustains information. However, these items can be moved from short-term memory to long-term memory with the process of rehearsal. With the process of rehearsal is very important. So, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की इम्पॉर्टेंस क्या है. थ्रू शॉर्ट टर्म मेमोरी हम इंफॉर्मेशन, हम लैंग्वेज को लाइक सीख सकते हैं, और हम लैंग्वेज लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं. बट शॉर्ट टर्म मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म मेमोरी, फॉर द मेमोराइजेशन पर्पस. ओके, like for example, if someone gives you a phone number verbally, he or she is telling you phone number verbally, and you are repeatedly saying that very number, okay, through repetition, through rehearsal, and then you write that very phone number, so it will be memorized in your long-term memory, or it will be
it will be transferred to your long term memory. लैंग्वेज भी इसी तरह हम सीखते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के डिफरेंट टाइप्स हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी, procedural memory, implicit memory, episodic memory, semantic memory, retrospective or prospective memory. These are the different types of long-term memory. Now, what is long-term memory? The long-term memory has the capacity to restore memories over a long period of time, and it is divided into implicit and explicit memory, okay? Like long-term memory has the capacity to restore more items, like 10 to 15 items till 5 minutes or till 10 minutes, okay, or till a long period of time. It restore or sustain information. It is within the long-term memory that we find episodic and semantic memory. These are the two main types of, firstly, there are two types of long-term memory, implicit and explicit memory, okay. Then comes episodic and semantic memory. These two are very important with reference to language learning, dear students, especially semantic memory. Both are closely related to the subject we are dealing with, the latter especially to the foreign language learning, like semantic memory. Now, what is semantic memory? Semantic memory contains all the knowledge people have about the world around them, including concepts. Yes, in semantic memory comes concepts, vocabulary, rules, and the correct use of these things, like the correct use of concepts, vocabulary, rules. This is processed through the hippocampus in the form of catalog of semantic categories, which explains why learning vocabulary, especially when learning a language, is more effective when it is organized by a topic or semantic categories. So, semantic memory में हमारे साथ concepts होते हैं, vocabulary, words हम store कर सकते हैं, foreign language के, target language के, ये सारे पड़े होते हैं। कहाँ पर? जिस तरह के कैटलॉग हम यूज़ करते हैं, जब हम लाइब्रेरी जाते हैं वहाँ पर हम कैटलॉग यूज़ करते हैं ताकि हम बुक्स को सर्च करें, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी कैटलॉग्स बने होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी डिफरेंट लेयर्स बने होते हैं, वर्ड्स के अपने होते हैं, कॉन्सेप्ट्स के अपने होते हैं, ठीक है, वोकेबलरी के अपने होते हैं, इसी तरह फ्रेजेस के अपने होते हैं, ठीक है, स्पेलिंग्स के अपने होते हैं। जब किसी से आप पूछे, किसी एक्सपर्ट से आप पूछे कि व्हाट आर द रूल्स और व्हाट आर द मेथड्स फॉर द स्पेलिंग रिकग्निशन और स्पेलिंग इम्प्रूवमेंट, सो किसी एक्सपर्ट ने बताया था कि आपको वक्त के साथ साथ जहन में एक खाका बन जाएगा। सो फिर आप क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग्स को कि मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं। So that's why semantic memory is very important for language learning. Semantic memory, language acquisition of vocabulary के लिए हम vocabulary कैसे acquire करते हैं, our students vocabulary कैसे acquire करते हैं? Through semantic memory. It requires conscious recall. It includes information which is or are consciously stored or retrieved. Dear students, consciously का मतलब ये है जब हम बहुत मुहतात तरीके से इंफॉर्मेशन, हम कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करें, इंफॉर्मेशन को हम रिकॉल करें, ठीक है। हम कभी कभी मेमोरी पे बोझ डालते हैं, ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि बोझ डालें और कुछ हम याद करें, ठीक है, कुछ रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। सो ये सिमेंटिक मेमोरी, ये कॉन्शियसली हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं, कॉन्शियस मेमोरी में, सिमेंटिक मेमोरी में पड़े होते हैं, ठीक है, चीज़ें। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन विच इज़ आर कॉन्शियसली स्टोर आर रिट्रीव्ड, लाइक फैक्ट्स,
taken out of context. Yes, कॉन्टेक्स्ट में कुछ लाइक कुछ हुआ है एक कॉन्टेक्स्ट में, वो आप रिकॉल करते हैं थ्रू कॉन्शियस एफर्ट्स. Now, another type of long-term memory, that is episodic memory. Episodic memory also plays an important role in the learning process, in the learning of language. It is in charge of storing the events and concrete facts left throughout life, being able to recover moments through the contextual information linked to the spatial and temporal variables related to such events. Ji, episodic memory we remember with the help of episodic memory we remember specific personal experiences. ठीक है, कुछ जगहों पर हमारे साथ कुछ हुआ है, कुछ एक्सपीरियंस हमारी हुई है, ठीक है, कुछ चीज़ों को हमने एक्सपीरियंस किया है, वो कहाँ पर होते हैं? एपिसोडिक मेमोरी में होते हैं. जिस तरह की पर्सनल एक्सपीरियंस हम हेल्प ले सकते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस की रिकॉलिंग में episodic memory से. Episodic memory includes personal experience such as when I was in Paris, I saw Mona Lisa. ये अब कॉन्टेक्स्ट में कुछ हुआ है ना, तो ये हम रिकॉल कर सकते हैं फ्रॉम episodic memory. Now we have procedural memory, very important with respect to language learning, dear students. Procedural memory is also called muscle memory. It is activated to recall issues related to the movement sequences. Yes, कुछ चीज़ें हम सीक्वेंसेस में सीखते हैं, सीरीज में, तरतीब में हम सीखते हैं, ठीक है. जिस तरह की लैंग्वेज को हम एक सीरीज में सीखते हैं, फर्स्ट हम वर्ड्स सीखते हैं, फर्स्ट हम एक एक लेटर सीखते हैं, फिर वर्ड्स सीखते हैं, ठीक है, लेटर से वर्ड्स बनाते हैं प्राइमरी क्लासेस में, फिर मिडिल क्लासेस में, फिर लाइक सेकेंडरी लेवल पर और हायर सेकेंडरी लेवल पर डिफरेंट चीज़ें हम सीक्वेंस में सीखते हैं, ठीक है. सो प्रोसीजरल मेमोरी में जिस तरह की प्रोसेस में हम सीखते हैं, प्रोसीजरल मेमोरी एक तरीक़ेकार के साथ हम सीखते हैं चीज़ों को. सो द रिपीटिशन ऑफ मूवमेंट सीक्वेंसेस रीइंफोर्सेस दिस मेमोरी. जी, जब हम रिपीटिशन करते हैं, बार बार पढ़ते हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारी प्रोसीजरल मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है और हम चीज़ों को कैपेसिटी ज़्यादा बन जाती है. जब आप रिपीटेडली चीज़ों को सीखते हैं, एक तरतीब के साथ ख़ास ऑर्डर में चीज़ों को सीखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस मेमोरी को ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, ठीक है. अच्छा, इट इज़ एन अनकॉन्शियस मेमोरी which includes habits, awareness and classic conditioning as well as perceptual and motor skills. Yes, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर जाते हैं तो फिर क्या होता है, अनकॉन्शियस मेमोरी में वो चीज़ें चली जाती हैं. जिस तरह की ड्राइविंग स्किल है, आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप देखते नहीं हैं कि गियर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, ठीक है. फर्स्टली यू आर लुकिंग एट दीज थिंग्स, स्पेसिफिकली you have having concern with these things. बट जब ये इम्प्रूव हो जाते हैं प्रैक्टिस से, एक ख़ास सीक्वेंस से, तो फिर आप देखते नहीं हैं, ठीक है. लैंग्वेज भी इसी तरह हम सीखते हैं. जिस तरह की कहा जाता है, दाग का एक शेर है, नहीं केल ये दाग यारों से कह दो, नहीं केल ये दाग यारों से कह दो, कि आती है उर्दू ज़ुबां आते आते, कि आती है उर्दू ज़ुबां आते आते, ठीक है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. इट इज़ जनरली अ फेथफुल, rigid and lasting memory which is gradually acquired and perfected with what? With the help of practice. The use of automatic memory can promote procedural memory. Emotional memory, dear students, the last type of memory cited by Springer is emotional memory. It has more recall power than other types of memories. Yes, emotional memory को बहुत सराहा जाता है लैंग्वेज में. Emotional memory is activated when students
participate in fun activities or enjoy or relaxed in safe environment. Dear students, ये कहा जाता है कि आप स्टूडेंट को फन के जरिए लैंग्वेज सिखाएं, ठीक है, फन क्रिएट करें, लाफिंग क्रिएट करें, ठीक है, उनको इंजॉयमेंट क्रिएट करें इनसाइड द क्लास, ताकि वो उसमें पार्टिसिपेशन करें और इमोशनल मेमोरी को वो चीज़ें ऐड करें. सो वोकेबलरी भी आप गेन कर सकते हैं. अगर आप गेम खेलते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आप इस तरह प्लेस करें कि वो वर्ड प्ले करे, वर्ड गेम वो प्ले करे, ठीक है. लाइक वी आर हैविंग पन अपॉन द वर्ड्स, pun upon the words, to play with words. So through this process, we can improve our language vocabulary. We can gain new vocabulary through emotional memory. Like music class. Music class students, they are enjoying in music class, and they are also learning new things with the help of music class. Is the example of इमोशनल मेमोरी, जिसमें आप इमोशन को अराउज करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इन सम पार्ट्स 5 मेमोरी चैनल्स आर डिस्कस्ड. कुछ जगहों पर जिस तरह की स्प्रिंगर ने एक्सप्लेन की है, स्प्रिंगर एक्सप्लेन्स दैट पीपल रिमेंबर what they have learned using 5 memory channels placed in different parts of the brain with different cognitive processes. These 5 channels are semantic channel, episodic channel, procedural channel, automatic and emotional. Just name मतलब दूसरा दिया है. कभी कभी ये टाइप्स नहीं होते हैं मेमोरी के, कभी कभी इसको चैनल्स कहते हैं, ठीक है. Sometimes semantic memory, it is the type of long-term memory, and sometimes it is called one of the channels of memory. And etc. Dear students, there is activity for you people. Write an essay from 8 to 10 paragraphs while applying the notion of episodic memory, semantic memory and emotional memory. ठीक है, जिस आप इन मतलब टाइप्स ऑफ मेमोरी से हेल्प ले लें और आप एक एसे लिखें जो मुश्तमिल हो 8 से 10 पैराग्राफ्स पर, ठीक है. उसमें आप एपिसोडिक मेमोरी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर आप उधर जाएं, उस वहाँ से सीखें. सिमेंटिक मेमोरी से आप हेल्प ले लें और इमोशनल मेमोरी से आप हेल्प ले लें. फॉर एग्जांपल, आपके साथ कुछ हुआ है, कुछ ख़ास कॉन्टेक्स्ट में हुआ, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आप उसको आप तरतीब दे दें ऐसे में, ठीक है. सिमेंटिक कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करें और इमोशनल मेमोरी से आप हेल्प ले लें. सो यू शुड डू दिस एक्टिविटी मस्ट. Assalamu alaikum. If you have any question, you can ask in comments. Thanks for watching.